disorders, example diseases include like diabetes. Diabetes एक बहुत ही prevalent mitochondrial genetic disorder. This appears from generation to generation. Or Alzheimer disease is also a maternal disorder. We can say if there is if a mother is suffering from maternal disorder like Alzheimer, we can say this will be also transmitted to her son in next generation as well, or in offspring. Parkinson disease is also a kind of essential tremor group of essential tremor disease. Parkinson can also be transferred to the next generation due to maternal traits. Okay, further here you can see conclusion. If we will disclose the mitochondrial genome mitochondrial genome or inheritance patterns in a journal. So mitochondrial inheritance pattern does not match with the classical genetic approach. So classical genetic approach was different. Classical genetic approach was focusing like if we will bring or add a gene in a genome, then we can bring or produce a desired characters, or we can produce a specific protein of a desired nature. But in case of mitochondrial mode of inheritance, we usually say if mitochondrial vary itself, because mitochondria have great diversity in their production, there is a greater extent or mutation rate in mitochondrial genome. That's why we can say mitochondria mutation rate is very higher, and mitochondria are actually transmitted, the characters related to mitochondria are actually transmitted from parents, from mother to offspring in general. So this was actually not shared by the classical genetics, which is actually a part of mitochondrial mode of inheritance. So let move further challenges for researcher. तो रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू स्टडी द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में हमने क्या कहा कि म्यूटेशंस का रेट बहुत ज़्यादा हाई है. तो इस वजह से, और इसके अलावा न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अगर कंपैरेटिवली स्टडी करें, दिस इज आल्सो एन अदर चैलेंज फॉर द रिसर्चर. सो अ वैरायटी ऑफ चैलेंजेस वी कैन एक्सपेक्ट इफ वी आर गोइंग टू स्टडी माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम. फर्दर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन इन द वर्ल्ड. और एक और बात, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इट ब्रिंग्स डाइवर्सिटी इन द ह्यूमंस. जैसे हमने कहा कि अगर एक ट्रेट है किसी मदर में मौजूद है, and that trait is actually multiplied in offspring. Why? Because mother is a carrier of mitochondrial genome, so that trait could be transmitted into the future generation or offspring as well. That's why we can say humans can widespread from one place to another as well. कि अच्छा एक और बात, जैसे हम कहते हैं कि लोगों ने फलां जगह से माइग्रेट किया, जैसे मुस्लिम हिस्ट्री को आप पढ़ें तो हम कहते हैं लोगों ने डिफरेंट प्लेसेस से माइग्रेट करके किसी जगह पे आ गए. तो उसकी वजह यही होती है कि हम उनको ट्रैक भी कर सकते हैं, उनके ट्राइब्स को ट्रैक कर सकते हैं. ट्राइब्स को ट्रैक करने के लिए सिर्फ ये कि हमने उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसको असेस करना है, उसको स्टडी करना है. देन वी कैन ट्रैक tribe as well, people who belong from a specific tribe. Like here I added this diagram specifically for you because you were watching dramas during the COVID-19 pandemic, and this is actually a tribe, and we can, if we want to track the history of this tribe, we can do this one by finding the relevant peoples, and उन लोगों को फाइंड करें और उन लोगों के जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को अगर हम स्टडी करें तो हम ये जो हिस्टोरिकल ड्रामा है इसकी हिस्ट्री का, या जो इसके इंसेस्टर्स हैं उनके बेसिकली हम उनको ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ से मौजूद थे और किस जगह से वो आए हैं, किस जगह से उन्होंने ट्रैवल किया. क्योंकि जहाँ पे एक जगह पे लोग रह रहे होंगे तो उनको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेम हो सकते हैं ड्यू टू फैमिलियल एसोसिएशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. Mitochondrial DNA follows maternal lineage. Human migration can be tracked, justifying human population who left Africa hypothesis. So ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहले ज़माने में ये बिलीव किया जाता था शुरू में कि वो कहा जाता है कि ह्यूमंस की, जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमंस की पैदाइश कैसे हुई, इंसान कहाँ पे इंसानों ने जन्म लिया. तो इससे ये है कि इंसानों ने सबसे पहले, साइंटिस्ट बिलीव जो करते हैं, जो हाइपोथेसिस दी है कि सबसे पहले इंसान अफ्रीका में पैदा हुए. अब अफ्रीकन ह्यूमन बीइंग्स को आप देख लें, यू कैन सी कि बॉडी की शेप उनकी किस तरह से है. दे आर, सॉरी टू से, बट दे आर सम हाउ लाइक पीपल बिलीव मीन्स ह्यूमन बीइंग्स आर actually developed from the animals, the non-Muslim people believe. So we can say if we want to justify this, or if someone want to justify this, so that person can go for a mitochondrial DNA we can say studies. तो उन्होंने कहा कि जो
अफ्रीका से लोग आए हैं, बेसिकली अफ्रीका से फर्स्ट टाइम ह्यूमन जो है अफ्रीका में पैदा हुए और फिर अफ्रीका से दूसरे इलाकों में माइग्रेट करते रहे और मूव करते गए और फिर इस तरह पूरी दुनिया में इंसान फैल गए। दिस वाज एक्चुअली हाइपोथेसिस। तो अगर हम इसको सच्चाई को साबित करें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम क्या करें कि जितनी भी पूरी दुनिया में ह्यूमंस हैं उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को असेस किया जाए, और उनके जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम असेस करेंगे तो देन वी फाइंड द लीनिएज, क्या कि इनमें कितनी सिमिलरिटीज़ या फैमिलियल कि एक ही फैमिली या एक ही सिंगल काइंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पूरी दुनिया से जितने भी इंसान हमने लिए उनमें मौजूद है कि नहीं। सो दिस एक्चुअली, और फिर एक पूरा डेटाबेस बनाया जाए और उस डेटाबेस के भी आप पे कोई कंक्लूजन दिया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मोड ऑफ इनहेरिटेंस, means how mitochondrial DNA actually transfers from parents to offspring. So final concluding remarks for you guys: mitochondrial DNA takes part in deciding inheritance patterns or from transmission from parents to offspring, but only from mothers to offspring, means this is a maternal lineage trait. Mitochondrial DNA transmission from mother to offspring is a maternal lineage trait and it cannot transfer from father to the offspring. So that's all. If you have any question, post your question in comment box. Stay blessed. Allah Hafiz.